guys, welcome to our channel Yatha Suryastha Dhyanam I am Ruchi. Children, till now we have completed 6 chapters of EVS. Now we are doing chapter number 7, experiments with water. In the previous 2 videos we have done some amazing experiments with water. We have seen the amazing Dead Sea. We have learned about the Dandi March. And today is the conclusive video of this chapter. Yes, this is the last video of this chapter number 7, experiments with water. In this video we will do some more experiment, yes, and this is the conclusive video, so we will do some textbook solutions also. So I hope that this lesson will be very much clear to you after we finish this video. So if you have any queries regarding to it, then please ask in the comment section below. I'll be very glad to answer you. So let's begin our class. So friends, here we go with page number 62 of your textbook. In this exercise it is written, mark right for the things that float, mark wrong for those that sink. So this is the exercise and we will do it with the experiment. So let's begin the experiment. Hello friends, now we will do some experiments with water and observe which things floats and which things sinks. I am putting things one by one. I am putting half filled water bottle in this. This is the full filled bottle. Aluminium foil. So after doing this experiment, we have observed a few things and that we will mark here. We will mark correct for things which floated and we will mark cross for those things that sink. So first of all, empty bowl or katori. In our case, it was a plastic katori, so it floated. So I will put a tick mark here. After putting in 6 to 7 pebbles one by one, it sank. Iron nail or pin sank, so we will put a cross mark here. Matchstick floated, so tick mark here. Empty plastic bottle with its lid closed, so it floated, so we will put a tick mark here. When the bottle was half filled with water, then also it floated, but when the bottle was full of water, it sank, so we will put a cross mark here. Now aluminium foil, when open and spread out, it floated. When it was pressed tightly into a ball, it sank. When I made it in a cup-like shape, it floated.
soap cake sank, but when we kept that soap case on a small plastic plate, it floated. Piece of ice sank. So this was my observation when we did the experiment with water. Children, when any object fell from above, it falls on ground because of Earth's gravitational force that we all know. Whether it is a ball or an apple, everything which falls from above, it fell on ground because of Earth's gravitational force. कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तो वो हमेशा नीचे आती है. ग्रेविटेशनल फोर्स की ही तरह पानी में भी एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं बॉयंट फोर्स. In the same way, in water also exists the force which is called buoyant force. अब चिल्ड्रन देखते हैं कि ये buoyant force क्या होता है. Buoyancy is an upward force exerted by the liquid that opposes the weight of an immersed object. अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो पानी में गिरने वाली किसी भी चीज़ को जब नीचे से धक्का लगता है, धक्का मिलता है, तो उसे हम बॉयंट फोर्स के नाम से जानते हैं. सो नाउ चिल्ड्रन, हाउ विल वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग और सिंकिंग? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फेल इन वाटर, water has to give that object some space, and so some water will move to its sides, and this is called water displaced. कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरती है पानी में तो वो ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से कुछ पानी जो है वो साइड में हट जाता है. देखिए, आप देख सकते हैं ये पानी हट रहा है. तो जो ये पानी हट रहा है उसे हम कहते हैं वाटर डिस्प्लेस्ड. नाउ व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक. When weight of the object is less than weight of the displaced water, the object will float. यानी कि अगर किसी भी चीज़ का वेट है वो उसके डिस्प्लेस्ड वाटर से ज़्यादा होगा तो वो चीज़ सिंक हो जाएगी. एंड व्हेन किसी भी चीज़ का वेट है वो उसके डिस्प्लेस्ड वाटर से कम होगा तो वो फ्लोट करेगी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉयंट फोर्स यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और वेट कम हो रहा है तो चीज़ें फ्लोट कर रही है. बॉयंट फोर्स है वो कम है और चीज़ों की, ऑब्जेक्ट की वेट जो है वो ज़्यादा हो रही है तो वो सिंक कर रही है. So if you want to say in other words, when weight of an object is more than buoyant force, the object will sink. And when buoyant force is more than the weight of an object, it will float. Children, you will be surprised that why does a small needle sink and a heavy floats ship? उसका भी एक reason है. Floating and sinking of an object also depends upon area of the object. When area of the object is more, buoyant force exerted by the liquid will be more and the object will float. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शिप का जो नीचे का एरिया है, कुछ जो एरिया है वो पानी के अंदर है और उसका जो एरिया है वो बड़ा है. And that's why buoyant force exerted by the liquid will be more, and so the heavy ship will float and the needle will sink, because जो needle होता है उसका जो area होता है वो कम होता है buoyant force से, and that's why it will sink.
So I hope that the concept of why any object will sink or float आपको समझ में आ गया होगा. So on the basis of that we will do this exercise which is given on your page number 62. So let's begin. So the iron nail sank in water but the katori floated. I think this happened because iron nail displaced less water than the katori displaced. The empty plastic bottle floated on water. The bottle filled with water sank because bottle filled with water displays less amount of water than the empty water bottle displays. The aluminium foil floated when it was spread out. When pressed tightly into a ball, it sank. This may have happened because when pressed tightly into a ball, it would have displaced less amount of weight than the aluminium foil spread out. Now, let's move on to another topic, what dissolved and what did not, on page number 63. On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite shakarpara, a sweet dish. Ammi said, "Let me come back from the market, then I will make some for you." "Why don't you help me?" "Take 2 glasses of water and put a bowl of sugar in it. Mix it till it dissolves." Hamid thought, "Let me finish this work fast, then I will watch TV." Suggest some ways to Hamid for quickly dissolving water. Here, आयशा का भाई हामिद उसके घर आता है और उसे शक्कर पारे खाने का मन करता है. तो वो आयशा की अम्मी से कहता है कि मेरे लिए शक्कर पारे बनाइए. आयशा की अम्मी कहती है कि आप मुझे हेल्प कीजिए, 2 ग्लास पानी के अंदर शुगर डालिए और उसको मिक्स करते रहिए ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए. अब आप कुछ वेज बता सकते हैं हामिद को जिससे शुगर जो है वो क्विकली डिज़ोल्व हो जाए. देयर आर 3 वेज फॉर क्विकली डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर. फर्स्ट वन इज स्टर द वाटर कंटिन्यूअसली विथ स्पून. स्पून से पानी को लगातार हिलाते रहिए. हीट द वाटर, पानी को गर्म कर दीजिए. एंड लास्ट वन इज यूज पाउडर शुगर. पाउडर्ड शुगर का यूज़ कर सकते हैं. इन तीनों में से कोई भी एक वे चुनकर आप शुगर को जल्दी से पानी के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं. ऑन योर पेज नंबर 64 देयर इज वन अनदर एक्सपेरिमेंट. मेक ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स. For the experiment, you will need 4 to 5 glasses or bowls, spoon, water and the things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happens and note in the table. For this experiment, we will need some things which are salt, soil, chalk powder, 1 spoon milk and oil. So children, let's begin the experiment. Hello friends, let's do the experiment of what dissolves in water and what does not dissolve in water. First I am putting salt in the water. This is soil. This is the chalk powder. This is 1 spoon of milk. Here I am putting the oil in water. We will keep these items for 1 minute and see what happens to the water.
So after doing this experiment, let's fill this table. Salt, did it dissolve or not? Yes, we observed that salt dissolved. Salt and water got mixed together completely. Water remained transparent. Soil, no. Soil settled down at the bottom. Water became muddy. Chalk powder, no. Chalk powder settled down at the bottom. Water became whitish. In our case, we put yellow chalk. So our water became yellowish. 1 spoon milk. Yes, milk and water got mixed together completely. Water became whitish. Oil. No, oil floats on the surface of water. Children, let's answer some questions which arises after doing this experiment. Could you see the salt after it dissolved in water? If no, why? Salt when dissolved in water, it cannot be seen since it is soluble in nature. Soluble का मतलब होता है घुल जाना. Salt है वो soluble in nature है, वो पानी के अंदर घुल जाता है, इसीलिए हमें पानी के अंदर salt दिख नहीं रहा है. Does that mean that now the water does not have salt? If it has, then where is the salt? Salt being dissolved in water, it doesn't mean the water does not have salt. Salt पानी के अंदर घुल गया है, डिज़ोल्व हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सॉल्ट नहीं है. वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप वो पानी पिएंगे तो यू विल फील दैट वाटर इज सॉल्टी. आपको पानी खारा लगेगा, सॉल्टी लगेगा. That means that salt is present in water, but as it is dissolved in water, we cannot see the salt separately. What difference did you see in the water with salt and the water with chalk powder after keeping for some time? Salt when dissolved in water, it makes the water look transparent, while chalk powder doesn't get dissolved in water, instead it settles down at the bottom of the water. हमने देखा कि सॉल्ट पानी के अंदर घुल गया था and that's why जो पानी का कलर है वो ट्रांसपेरेंट था. Whereas in the case of chalk powder, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ, बल्कि वो पानी के नीचे बैठ गया. Which of the two would you be able to separate from water by straining with a cloth, salt or chalk powder? अगर आप एक कपड़े की मदद से पानी को स्ट्रेन करेंगे तो आप किसको सेपरेट कर पाएंगे, सॉल्ट को या chalk powder को? We can separate chalk powder by straining with a cloth since it doesn't get dissolved. Salt gets dissolved in water, hence we cannot strain it. हम chalk powder को separate कर सकते हैं because वो पानी के अंदर घुला हुआ नहीं है. Salt को हम strain नहीं कर पाएंगे because it is dissolved in water. Do you think the oil got dissolved in the water? Why do you think so? No, the oil doesn't get dissolved in water, it just float on the water. हमने देखा था ना, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तब हमने देखा था कि ऑयल है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ था, वो पानी के अंदर नहीं घुला था. हम उसे देख पा रहे थे, वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था. Let's move on to the last topic of this chapter, page number 65, racing drops. Aisha put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. Next to that, she put 2 drops of water and 2 drops of sugar solution. She tilted the lid. She saw some drops slid down quickly, while some were left behind. आयशा ने क्या किया, उसने 2 ड्रॉप्स ऑयल के डाले अपने टिफ़िन बॉक्स के लिड पर. उसके पास में उसने 2 ड्रॉप्स पानी के डाले और उसके पास में शुगर सॉल्यूशन के 2 ड्रॉप्स डाले. उसके बाद उसने टिल्ट किया, यानी कि उसका जो टिफ़िन बॉक्स है उसको ऐसे सीधा किया. आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर.
तो कुछ जो ड्रॉप्स है वो क्विकली नीचे आ रहे हैं और कुछ ड्रॉप्स है वो नीचे नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन अराइजेस, यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड, व्हाई डिड इट स्लाइड फास्टर। आप भी अपने घर में ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने आप वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका ये रिजल्ट आया। ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्लाइड फास्टर देन द ऑयल ड्रॉप्स और sugar solution since both oil and sugar solution are thicker than that of water and get stuck to the box by making it difficult to slide। हम देख सकते हैं कि जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो जल्दी नीचे आ जाते हैं। ऑयल के ड्रॉप्स और शुगर सॉल्यूशन के ड्रॉप वो थिक होते हैं पानी से, इसीलिए वो जल्दी से टिफ़िन बॉक्स के नीचे नहीं आते, जल्दी से स्लाइड नहीं करते। One day, Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came back to check, she found only a few drops of water left in the pan. एक बार आयशा की मम्मा ने गैस के ऊपर एक पतीले में पानी डाला और उसको उबालने के लिए रख दिया, पर वो बिज़ी हो गए अपने काम में और भूल गए। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि पानी है वो थोड़ा सा ही बचा है पैन के अंदर। थिंक वेयर डिड द वाटर गो, वो पानी कहाँ चला गया होगा। द वाटर फ्रॉम द पैन गॉट इवापोरेटेड एंड कन्वर्टेड टू वेपर। आप सब ने देखा होगा कि कई बार जब मम्मा खाना बनाती है तो पानी उबालती है तो जितना पानी डाला होता है उससे वो पानी कम हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि पानी जो है वो इवापोरेट होता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। Why did चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली अंडर द सन? हमने पिछले लेसन में देखा था जिसके अंदर चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने मैंगो की जेली को कहाँ पे रखा था? सन के नीचे रखा था। क्यों रखा था? चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू केप्ट देयर मैंगो जेली अंडर द सन इन ऑर्डर टू ड्राई इट। हम कोई भी चीज़ को सुखाने के लिए रखते हैं सन के अंडर में ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए। हमने देखा होगा कि जब भी कपड़े घर में धुल जाते हैं तो हम बाहर रखते हैं सुखाने के लिए। कभी कभी आपके मम्मा अचार होता है उसको भी बाहर सुखाने के लिए रखते हैं। आम का अचार हो, गाजर का अचार हो, कोई भी चीज़ है जिसको सुखानी होती है तो हम सन के नीचे रखते हैं ताकि उसके अंदर का जो एक्सेस पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाए और जो चीज़ हमने रखी है वो ड्राई हो जाए। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल अरुण ज्योत, उसके पास वाला बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।